Right. Welcome everybody. A very good evening. A very good evening. Hope you've been keeping well. Hope you've been keeping safe. Um, as mentioned yesterday, today as well as tomorrow, we'll be solving some advanced level questions of sentence correction, and then uh, we won't touch it for a while. I guess we'd be done with this section of the verbal uh, portion of the exam. So today and tomorrow we'll be catering to some very advanced level questions of sentence correction. That is what the aim is. That is what the lesson plan is. I hope you have fun solving all these questions today. Before we begin, I'll just give you a brief introduction to the Unacademy platform. Just hold on, give me a while. Right. So, Unacademy is perhaps India's largest learning platform for competitive exam preparation, including and essentially management exams like CAT. I am Prankur Arora. I've been a trainer and a coach for a while. I've been in the corporate learning industry for a while, for about 2.5 years, where I've worked with various organizations for various stints. Some of those organizations include Marico, Interglobe, BD India, FMC Corp, and the likes. I'm also a published writer. I authored this book called It's Not Funny. It was released a couple of years back, and it is a work of fiction, and you can find it on Amazon if you are a reader. Right. I also hold advanced certifications in facilitation from an American organization called Leadership Management International, and I run this small production house on the side called Tamasha Entertainment. At Unacademy, there are quite a lot of features that help it stand out and be the go-to platform for students like yourself. Some of those features include daily live classes where we have various live tests and quizzes. We also hold some polls while we are conducting those classes on the platform, and with polls, a very interesting engagement that you have is that you participate in those polls to be on the leaderboard, which is always visible to anybody and everybody who is taking that class, as well as giving you access to various structured courses that are made by subject matter experts and audited by credible people. With one subscription, you get access to anything and everything on the platform. So that is a real game changer. On the platform, we have various credible educators who've mentored a lot many people, who've trained a lot many people, and those people are right now either graduates of various IIMs or are currently sitting in various IIMs. Um, the really cool thing about the platform is that you can avail a live class free of cost and see whether this is something that will work for you or not work for you. Now, a very important thing is that on a daily basis, new batches are created on the platform, new courses are launched. So, whenever it is you choose to subscribe to the platform, you won't be missing out on anything essentially, because new batches and new courses are always coming up, as well as recordings of the previous batches and the courses are always there on the platform for you to access. Now, at Unacademy, you decide your own schedule, you personalize your own schedule, you decide for yourself what it is you want to study, what it is you want to learn, and then we have a system of push notifications which we use as reminders so that you never miss a class that you really, really want to attend. Now, language is never a barrier because we have educators teaching in vernacular languages. Plus, as I mentioned, you design your own schedule, so you have the option of learning anytime, anywhere. There are no obstacles whatsoever. On the platform, you get to interact with the educators. You can ask us doubts. You can, we hold discussions that you can participate in, and all this happens while the class is going on. Now, as I mentioned, there is a feature where we, launch live polls. So you participate in those polls and you compete for a place on the leaderboard. That is a real adrenaline rush, trust me. A very important thing is an academy gives you a lot of analytics, right? So the assignments that you do, the exams that you give on the platform, you get in-depth insights of your performance, for example, topic wise scores, or the kind of time you're spending on every question, right? So these statistics, this analysis will help you tweak your learning journey, right? It will tell you where you have to devote more time and where you
you're really up to the mark. So that is something very, very important that the platform helps you with. Now, oh, thanks, Ravi. Thank you so much. Now, a very interesting thing is that, apart from the live tests and quizzes and the analytics, you get access to a lot of free resources that that are made available by the educators to all the learners on the platform. So, having said that, let's delve into the lesson for today. Wait, before that, I missed out on one thing. There are various subscription models that Unacademy provides you. Now, as you can see clearly, the longer the duration of your subscription, the cheaper the subscription actually costs you. And as I've always mentioned, a very important thing about any learning journey is the chemistry that you develop with your educators. So the longer the subscription that you opt for, the more comfort level you'll be able to develop with the educators that you're learning from. So I would suggest you opt in for a longer subscription, and even if you don't, if you use my name, which is Prankur, Prankur, if you use my name, you get an extra 10% off on any of the subscriptions that you opt in for. Having said that, let's jump into the questions for today. Now, we've covered a lot of rules pertaining to sentence correction over the past couple of weeks. We've covered modifiers, parallelism, noun verb agreement, pronouns. We've covered various rules of tenses. Today's questions will test all of that. Because this is an advanced level class, I'll be explaining everything, anything and everything, all the rules that will be used in the questions. But I have tried to put in those questions that combine two or three rules, right? Because I think you're more than ready for all of it. So we'll begin with a few warm-up questions just to get our brains running, just to get our brains functioning. So after two or three warm-up questions, we'll jump into the advanced level questions. So firstly, we have these three quick warm-up questions. You can clearly see the first question says the mainland was visited by explorers much later than. Then we have two options in the brackets. If you're solving these questions, hit me up with the answer in the chat and then we'll discuss it. I'm giving you 30 seconds, not more than that. I'm waiting for an answer, guys. I'm waiting for an answer. Come on, come on, come on. Will it be this or this? Now, this is a comparison question, right? So, whenever we are comparing two things, we compare apples with apples, right? We compare apples with apples much later than, right? So, what are we comparing here? What are we comparing? We are comparing the mainland, or are we comparing the visit? That is a very important thing for us to understand. Are we comparing the mainland or are we comparing the visit? The mainland was visited by explorers much later than the outlying islands, or were the outlying islands, right? So had we been comparing the mainland, had we been comparing this, our answer would be this. But we are comparing the visit. We are comparing the visit. So the answer would be the mainland was visited by explorers much later than were the outlying islands, right? So we are comparing the visit to the mainland with the visit to the outlying islands, right? So we opt in for the second option and not the first option. अगर हम लोग मेनलैंड को कंपेयर कर रहे होते तो हम लोग का आंसर आउटलाइंग आइलैंड्स होता, बट हम लोग विजिट को कंपेयर कर रहे हैं. Therefore, our answer is were the outlying islands. Now let's move on to the second question. Arranged in secret, the discovery of Romeo and Juliet's marriage
was made only after their deaths. I'll again give you 30 seconds. If you understand what is the error in the sentence, let me know in the chat. If you understand the error, hit me up in the chat. 30 seconds and then I'll give you the explanation. All right. So this is clearly a case of if you remember some of the rules of the modifiers, this is clearly a case of sentence 1, comma sentence 2, right? So this is clearly the case of sentence 1, comma sentence 2. And whenever we have such a phrasing to our question, जो comma के बाद सबसे पहले sentence 2 में आता है ना, that has to be modifying sentence 1 because sentence 1 is incomplete. Arranged in secret. What was arranged in secret? What was arranged in secret? Was the discovery arranged in secret or was the marriage arranged in secret? ठीक है, तो ये क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ अ मॉडिफायर एरर. ठीक है, दिस इज अ मॉडिफायर एरर, दिस इज अ मिसप्लेस मॉडिफायर बिकॉज आपकी मैरिज जो है वो सीक्रेट में अरेंज हुई थी. तो आपके कॉमा के बाद क्या आना चाहिए? रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज. दिस इज व्हाट शुड कम आफ्टर द कॉमा. सो दिस इज अ केस ऑफ अ मिसप्लेस मॉडिफायर. इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे? अरेंज्ड इन सीक्रेट, रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज was only discovered after their deaths. Something like that. That will be a solution to the error in this question. ठीक है, now let's move on to the third question. तो पहले क्वेश्चन में हमारा क्या एरर था? पहले क्वेश्चन में हमारा कंपैरिजन एरर था. दूसरे क्वेश्चन में हमारा मॉडिफायर का एरर है. अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या एरर रिजॉल्व कर रहे हैं. Before the union leadership even began salary negotiations, it dash up its mind to stand firm in its position. Before the union leadership even began salary negotiations, it dashed up its mind to stand firm in its position. यहाँ पे past perfect tense आएगा या simple past tense आएगा? अगर आपको समझ आ रहा है, give me your answer in the chat. I'll again wait for 30 seconds. Try to give me your answers. अगर आप गलत आंसर भी देते हो तो I'll tell you why your answer is wrong or what is the thought process behind the correct answer, ताकि आपको ज्यादा समझ आए. Okay, Shivraj says made. All right. Okay, Shivraj, thank you for your participation. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि बिफोर द यूनियन लीडरशिप इवन बिगैन सैलरी नेगोशिएशंस, इट डैश अप इट्स माइंड टू स्टैंड फर्म इन इट्स पोजीशन. नाउ क्लियरली दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अकर्ड इन द पास्ट. बट पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं? पास्ट में क्या हुआ है? पास्ट में आपकी सैलरी नेगोशिएशन हुई है और पास्ट में आपकी लीडरशिप ने अपना माइंड मेकअप पहले ही कर लिया था. ठीक है, देर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द पास्ट. सो शिवराज, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, जब दो चीजें आपकी पास्ट में हो रही होती हैं और दोनों चीजें पास्ट में होके खत्म हो चुकी हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस आउट ऑफ द टू विल टेक अ पास्ट परफेक्ट
And the second thing that happens will take up simple past tense. Whenever there are two actions, action 1 and action 2, whenever there are two actions that happen in the past, action 1 will take up past perfect and action 2 will take up simple past. और अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन याद हो, स्ट्रक्चर याद हो, तो पास्ट परफेक्ट इज ऑलवेज हैड प्लस योर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल भूल जाओ, जागन याद करने की जरूरत नहीं है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड. अब यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव समथिंग दैट इज इन सिंपल पास्ट, सो दिस वाज अनदर हिंट इन दिस क्वेश्चन. ये चीज बाद में हुई, माइंड मेकअप पहले हुआ. माइंड मेकअप पहले हुआ इसलिए माइंड मेकअप का आपका पास परफेक्ट टेंस आएगा. एंड शिवराज, द आंसर विल बी हैड मेड because we already have something that happened after the mind makeup, which was salary negotiations. So salary negotiation simple past tense, mind makeup past perfect tense. All right, remember this rule. This is a very very important rule and this is very often tested in sentence correction questions. पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं सेंटेंस करेक्शन में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन नाउ. आई विल गिव यू 60 seconds फॉर दिस क्वेश्चन. हिट मी अप इन दी चैट अगेन विद योर आंसर. मुझे बस ये बता दो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, चलो गिव मी योर आंसर. Come on guys, this is fairly easy. This is fairly easy. If you remember, जब भी हमारा ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस में, डैश कॉमा बट डैश, सो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज, अगर आपको पैरेललिज्म का रूल याद हो कॉरिलेटिव्स में, वन ऑफ द फॉर्म्स दैट वी हैव इज नॉट एक्स बट वाई. ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एक्स बट वाई. यस अनुष्का, यू करेक्ट विद योर सोल्यूशन. The correct form will be, not all competitive exams allow the use of a calculator, but where they are permitted, there are restrictions on the models allowed. ठीक है, अगर आपको पता हो तो ये भी प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, and not x but y is a correlative that we already know of, so we'll straight away go for that answer and we can eliminate all other solutions. All right, let's move on to the next question. ये सेंटेंस बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप रूल क्रैक कर लोगे ना इस क्वेश्चन का, तो ये 2 सेकंड में होगा क्वेश्चन.
All right, guys, let's try and simplify this for ourselves. Maybe then you'll be able to land an answer. हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं इधर? हम लोग कर रहे हैं Laos has a land area about the same as Great Britain but only 4 million in population, where many are members of hill tribes ensconced in the virtually inaccessible mountain valleys of the north. Anushka says A. All right. What are we comparing here? We are comparing the land area. ठीक है. और अब सीधा आप ऑप्शंस पे जाओ. ऑप्शंस में बी ऑप्शन से सेम साइज, सी ऑप्शन से सेम साइज, डी ऑप्शन से सेम साइज. हम साइज कंपेयर कर रहे हैं या हम लैंड एरिया कंपेयर कर रहे हैं? हम लैंड एरिया कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो आप बी, सी और डी तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो लेओस का लैंड एरिया और ग्रेट ब्रिटेन का लैंड एरिया. सो वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई. नाउ अनुष्का, लेट्स ट्राई एंड लुक इनटू ऑप्शन ए. लेओस हैज अ लैंड एरिया about the same as Great Britain but only 4 million in population, where many. ठीक है. अब एक और चीज है, आपके कॉमा के बाद ये प्रोनाउन आया है where. Where is referring to the population, but can where refer to a population? Can where be a pronoun for population? पॉपुलेशन के आप वेयर, पॉपुलेशन के लिए आप वेयर तो यूज कर ही नहीं सकते. दिस इज द रॉन्ग यूज ऑफ अ प्रोनाउन. सो वी अगेन एलिमिनेट ए. वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन ई, कंपेरेबल टू दैट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. टू दैट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये सीधा साइज को कंपेयर कर रहा है. ठीक है, दैट इज रेफरिंग टू द लैंड एरिया. ठीक है, तो आपका ये पार्ट तो सही है. अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं. बट अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 4 million people, many of whom. Now this is the correct pronoun. Whom is the correct pronoun for population. Where is not the correct pronoun for population, Anushka. Therefore we go with option E. Alright guys, I hope you've understood this. Let's move on to the next question now. डोंट गेट बॉग डाउन बाय द सेंटेंसेस, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस पक्का आएंगे. ठीक है, डोंट गेट बॉग डाउन बाय द सेंटेंसेस. रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू क्रैक द रूल. एवरी सेंटेंस हैज अ ट्रिक टू इट, जिसके थ्रू आप अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो. तो आपका दिमाग बस उस ट्रिक के ऊपर जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल करा जाए. ठीक है, ट्राई एंड सॉल्व दिस वन नाउ. I'll give you a hint for this question. Even this question makes use of a correlative. कौन सा correlative? Not only x but also y. And your x and your y, they have to be parallel. Alright, they have to be parallel. Try to solve it now. Anushka says D. Okay, let's look into the solution. Kung Fu is an ancient form of self-defense, but also a complete belief system that includes spiritualistic views on society, psychology and nutrition. ठीक है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दोगे बिकॉज आपकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए नॉट ओनली एक्स बट ऑल्सो वाई. ऑल राइट, शिवराज ऑल्सो सेज डी. ऑल राइट, let's try and follow the process of elimination now. We'll look at our options. Not only an ancient form of self-defense, but also a complete belief system that includes spiritualistic views on society, psychology, and nutrition. Okay. Not only an ancient form of self-defense, but also a complete belief system that includes spiritualistic views on society, on psychology, on nutrition. इसमें अगर आप on इस लिस्ट से, इफ यू रिमेंबर दिस इज अ लिस्ट ऑफ 1, 2 and 3 थिंग्स, तो ये अगर ऑन लिस्ट से पहले आ जाएगा तो आपको तीनों बार ऑन नहीं करना पड़ेगा. ये भी गया. ठीक है, ऑप्शन डी, नॉट ओनली एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस बट ऑल्सो अ कंप्लीट. ये बी ऑप्शन भी आपका क्यों एलिमिनेट हुआ था? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑल्सो है और हमारा क्या चाहिए? बट ऑल्सो. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन डी,
let's validate it. Not only an ancient form of self defense, but also a complete belief system that includes spiritualistic views on, and then we have items in the list: one, two, three. On refers to all three equally. Anushka and Shivraj have gotten it correct. Good job, guys. Let's move on to the next question now. 60 seconds. Don't give yourself more than 60 seconds. All right? Okay, Shivraj says the first one and Anushka says the second one. All right. Let's follow the process of elimination in this question. सबसे पहले आप question पढ़ो. Ella Fitzgerald's unbridled delight in singing and her far-ranging versatility, encompassing styles as diverse as mournful ballads and show-stopping scat singing, lends credence to the numerous musicologists who claim her to be the greatest female vocalist of her generation. अब ऐसे questions में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. आपका अंडरलाइन पार्ट इधर है और आपका सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट इधर है, तो ये बीच का जो इन्होंने इतना बड़ा मॉडिफायर डाला है ना, एनकम्पासिंग स्टाइल्स एज डाइवर्स एज मूनफुल बैलेड्स एंड शो स्टॉपिंग स्कैट सिंगिंग, जस्ट कट इट ऑफ बिकॉज दिस इज अ मॉडिफायर. एंड इफ यू रिमेंबर, मॉडिफायर्स का मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया है कि मॉडिफायर आपके बेसिक सेंटेंस के ऊपर आता है. तो अगर आप मॉडिफायर हटा दोगे तो वो सेंटेंस को बदल नहीं देगा. ठीक है, तो आप मॉडिफायर को इधर हटा सकते हो बिकॉज योर सेंटेंस डज नॉट चेंज, द सेंटेंसेस मीनिंग डज नॉट चेंज, इट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? सो Ella Fitzgerald's unbridled delight, number one, unbridled delight in singing and her far-ranging versatility. So we have two things, we have two features that give her credence. All right, what give her credence? मैंने क्या बोला है? सबसे पहले आप क्वेश्चन, वर्ब जो होता है, आप वर्ब का क्वेश्चन बनाते हो. What, right? What lends her freedom? What lends her credence? Unbridled delight and far-ranging versatility. So we have two things. This means we need a plural verb. Lends is singular. वर्ब के आगे जब एस या ई एस आ जाता है, वर्ब आपका सिंगुलर बन जाता है, बट आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है. ठीक है, क्या क्रीडेंस दे रहा है? अनब्राइडल्ड डिलाइट क्रीडेंस दे रहा है और फार रेंजिंग वर्सिटैलिटी दे रहे हैं. दो चीजें क्रीडेंस दे रही हैं, तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए. देयरफॉर वी एलिमिनेट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 straight away because this is singular, this is also singular, and you need a plural verb. All right, Shivraj. Therefore, we are left with option 2 and option 4. Now let's look at these. Lend credence to the numerous musicologists who claim she is. This looks to be the correct answer. Let's look at the fourth one. Have made believable the numerous musicologists' claims of her to be. Again, this is one, number one, this is doing away with the words that are, mentioned in the sentence. Number two, this is a very awkward construction. This is a simpler construction. And when we have options between a simple construction and a very awkward construction, we choose the simpler construction, and that is why we go with option 2 and we eliminate the all the three other options. Good job, Anushka.
Shivraj, I hope you've understood why we are not going with option 1. All right, let's move on to the next question now. आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स. अगर 60 सेकेंड्स में आपका आंसर नहीं आता तो मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा. ऑल राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू कवर नाउ and I really think you should not give yourself more than 60 seconds for such questions. Okay, Anushka says the third option. All right, let's look at whether Anushka is correct. The activism of state citizens who have demanded safer road conditions as well as stiffer penalties for intoxicated drivers have led to a significant decrease in the number of traffic accidents. Okay, this is our verb. Yes. What or who have led? इसका क्या आंसर आएगा? वर्ब को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट मिल जाता है. तो आपका क्या आंसर आ रहा है? एक्टिविज्म ऑफ स्टेट सिटीजंस. एंड एक्टिविज्म इज सिंगुलर. Bhavya also says the third option. All right, Bhavya, thank you for participating. This is singular. We always remove the other options. तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं. अब हमें इन तीनों में से चूज करना है. ठीक है? So we have has led to a significant decrease in the number, has been significant in the decrease in the number. Now this is present perfect tense. हमें present perfect tense की जरूरत नहीं है इधर. क्यों जरूरत नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट की क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज गिव्स अस अ बेटर मीनिंग. हैज बीन सिग्निफिकेंट इन द डिक्रीज इन द नंबर इज वन awkward construction, and two, it is telling us about something that has been taking place, that has been significant. But this is a fact. Therefore, we need a fact. We need simple present tense. And now let's look at option 5. Has significantly decreased the amount. अब एक और चीज है, जब आपका नंबर होता है और आपका अमाउंट होता है, अमाउंट इज यूज्ड व्हेन योर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट countable, and when your objects are countable then we choose number. ठीक है? और हमारा इधर किस चीज की बात हो रही है? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात हो रही है. ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इज अ काउंटेबल ऑब्जेक्ट. देयरफॉर वी गो विद नंबर. एंड अनुष्का एंड भव्या आर करेक्ट विद देयर चॉइस. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Actual evidence of misconduct may not be the most important criteria to determine whether a president gets impeached.
Bhavya says the third one. All right. Let's look at the answer. Let's look at the answer. सबसे पहले तो actual evidence of misconduct may not be the most important criteria to determine whether a president gets impeached. The most important thing for us is to find out whether we need criteria or we need criterion. Actual evidence of misconduct. This is singular. Therefore, we need singular and criteria is plural. Therefore, हम लोग फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हो रहा है. ठीक है, दिस इज प्लूरल and actual evidence of misconduct is singular. Evidence of misconduct is singular. Okay, so we have options 2 and options 3. The most important criterion in determining whether a president gets impeached, or the most important criterion to determine if a president gets impeached. Now Bhavya, what is happening in this third option is to determine जो है वो आपका टेंस बदल रहा है सेंटेंस का. सेकेंड ऑप्शन आपका टेंस नहीं बदल रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन डिटर्मिनिंग वेदर अ प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच्ड, दिस इज नॉट चेंजिंग द टेंस ऑफ योर सेंटेंस. टू डिटर्मिन will change the tense of your sentence. Okay, therefore we remove the third option again and we choose the second option because ये भी singular है और हमारे sentence का tense नहीं बदल रहा है. ठीक है, I hope you've understood this explanation. Let's move on to the next question now. This is a very interesting question. One of the problems that occur as a result of coal mining is the increasing incidences of lung cancer. This is a very interesting, a very important question क्योंकि इसमें हम एक बहुत important rule को test कर रहे हैं. Pay attention to this verb, pay attention to this verb, and pay attention to this. There are three things that you have to pay attention to. Anushka says the second option. All right. Okay, okay, okay. Let's look at the explanation now. One of the problems that occur as a result of coal mining is the increasing incidences of lung cancer. ठीक है, सबसे पहले आपने इस वर्ब को उठाया, इससे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इंक्रीजिंग, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो हमारा ये वर्ब सिंगुलर ही होना है. ठीक है, और हमारे दो ऑप्शंस हैं जहां पे ये वर्ब प्लूरल है, जहां पे आर है. देयरफॉर वी ऑलरेडी एलिमिनेट द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑप्शंस बिकॉज ये वर्ब हमारा सिंगुलर है. व्हाट इज One of the problems that occur as a result of coal mining is the increasing incidences of lung cancer. What is the increasing? What is when you ask this question here, right? When you ask this question here, what is the problem? One of the problems is the answer. One of the problems is the subject to this verb. ठीक है, सबसे पहले आपने इस वर्ब को उठा के क्वेश्चन पूछा. ठीक है, now let's move on to this verb. One of the problems that occur, one of the problems that occur. ठीक है, अब ये जो occur है, this is plural, right? What we have to check is whether this needs plural form or this needs singular form. पहले तो हमने फिगर आउट कर लिया कि जो हमारा ये वाला वर्ब है, अगर आप इधर what या who वाला क्वेश्चन पूछोगे तो आपको अपना सब्जेक्ट मिलेगा और आपका सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, आपका सब्जेक्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स निकल के आएगा. ठीक है,
ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस इज प्लूरल. दिस इज रेफरिंग टू व्हाट? दिस इज रेफरिंग टू प्रॉब्लम्स. दिस इज राइट नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स. That is a pronoun for problems, and this is, or rather that is modifying problems, and occur is referring to problems, and problems is plural. And we go back to the verb. This verb is also plural. तो हमारा अकर होना चाहिए और हमारा इज होना चाहिए. उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए हमारे पास बस फोर्थ ऑप्शन है, and therefore we eliminate the second one. Now a very important thing to look at is the fourth option says incidence, right? The increasing incidences of lung cancer नहीं होगा, increasing incidence होगा, because this is when we have something like increasing. जब हमारे पास ये adverb है, जब ये हमारे पास ये adverb है, this means we are talking about frequency. And when we are talking about frequency, we need increasing incidence, not increasing incidences. Incidences is already giving you a number, but we have this adverb. Therefore, we need incidence and we don't need incidences. ठीक है guys? तो यहाँ पे दो तीन तरह से अगर आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते ना, तो आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते तो आपका सोल्यूशन ये निकल के आ जाता. All right, this sentence has two verbs, and that is why I guess Anushka, Shivraj, the both of you got confused. This has two verbs. पहले आपने मेन वर्ब को चुना, आपने इज को चुना और आपने इज से क्वेश्चन पूछा, राइट? आपने इससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ लंग कैंसर? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग. व्हाट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम इज कोल माइनिंग, ठीक है? और यहाँ पे अकर इज प्लेस राइट नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स. दैट इज व्हाई इट विल टेक अ प्लूरल फॉर्म. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज द सब्जेक्ट. आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए हमारा अकर्स आना चाहिए, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन. बट वेयर यू गॉट कंफ्यूज्ड इज दैट if this is the subject, the verb that it will refer to is and not occur. Occur is only for problems. ठीक है? Let's move on to the next question. Try to be quick with your solutions, guys. It's not as complex as it seems. Just try to understand the meaning of the sentence and then try to figure out कि इसमें कौन सा रूल टेस्ट किया जा रहा है. The electronics company has unveiled what it claims to be the world's smallest network digital camcorder, the length of which is that of a handheld computer, and it weighs less than 11 ounces. सबसे पहले सेंटेंस रीड करते हुए ही, ओके अनुष्का सेज ए, सबसे पहले सेंटेंस रीड करते हुए ही यू फिगर आउट कि ये जो इट है, सेंटेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ बनाया है जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट डिजिटल कैमकॉर्डर है. कैमकॉर्डर क्या होता है? हैंडी कैम जो होते हैं, ठीक है, दैट इज अ कैमकॉर्डर. नाउ इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ये कैमकॉर्डर बनाया है और उस कैमकॉर्डर की लेंथ एक हैंडल्ड कंप्यूटर की जितनी है और उसका वेट बताया है, राइट?
But when you read this sentence, the electronics company has unveiled what it claims. Now, this it is referring to what? This it is referring to electronics company. Okay? What it claims to be the world's smallest network digital camcorder, the length of which is that of a handheld computer, and it weighs less than 11 ounces. अब ये जो it आया है ना, this it is ambiguous. This it is posing a question mark. ये वाला इट हैंडहेल्ड कंप्यूटर को रेफर कर रहा है या नेटवर्क डिजिटल कैमकॉर्डर को रेफर कर रहा है? बिकॉज ये एम्बिगुअस है. अब आप अपने ऑप्शंस में जाओ, सबसे पहले तो जहां भी ये वाला इट यूज हुआ है इस जगह पर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, बिकॉज दिस इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट टारगेट. दिस इट इज पोजिंग अ क्वेश्चन. दिस इट इज एम्बिगुअस. ठीक है, तो सबसे पहले तो कहाँ पे इट यूज हुआ है हमारा? एंड इट वेज. ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे इट यूज हुआ है और कहीं पे इट यूज हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ. नाउ वी आर लेफ्ट विथ थ्री ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैज अनवेल्ड व्हाट इट क्लेम्स. क्लेम्स टू बी हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन क्लेम्स इज. तो हमें टू बी वाली ऑप्शन के साथ जाना है या हमें क्लेम्स इज वाले ऑप्शन के पास जाना है? हमें क्लेम्स इज वाले ऑप्शन के पास जाना है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. और दूसरी चीज जो आप देख सकते हो, दूसरी चीज जो आप देख सकते हो, दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो? दूसरी चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लेम्स है. क्लेम्स के साथ पैरेलल क्या है? क्लेम्स के साथ पैरेलल वेज है या क्लेम्स के साथ पैरेलल वेइंग है? ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज दिस वर्ब इज नॉट पैरेलल टू क्लेम्स. वेज इज पैरेलल टू क्लेम्स. ऑल राइट. Therefore, A option also gets eliminated, D option also gets eliminated, and B also gets eliminated, and we are only left with C. Okay? I hope you understood this question. यहाँ पे दो तीन errors थे. यहाँ पे आपका parallelism test हो गया claims और ways में, और दूसरा आपका it pronoun test हो गया. All right? I hope you understood this question. Let's move on to another one now. In this question, let me give you a hint. In this question, if you're able to crack what is being tested, इसका सबसे डायरेक्ट आंसर है. सबसे डायरेक्ट आंसर है. रिमेंबर द रूल. whenever you are comparing two things, apples are always compared with apples. Apples are never compared with oranges. You have to figure out what are the apples in this question. Anushka says the third one. Okay, Anushka, what are we comparing in this question? We are comparing unlike other primates. ठीक है, हमारे पास क्या है? This is a comparison term. Unlike is a comparison term. So we are comparing primates, जिनको हम बोल रहे हैं कि primates are born with fully formed craniums. A newborn human
baby's cranium consists of 8 bones that take years to fuse together fully, allowing the brain to grow much larger during those early years. ठीक है, तो इसमें आपको क्या कंपेयर करना है? इसमें आपको प्राइमेट्स को कंपेयर करना है किससे? ह्यूमन से। तो आप प्राइमेट्स को कभी भी एक ह्यूमन के ब्रेन के साथ कंपेयर नहीं करोगे. दिस विच आर born with fully formed craniums is a feature of the brain of the primates, but you are comparing primates, you're not comparing craniums. Therefore, let's look at our options. Fully formed craniums, a newborn human baby's cranium. ये क्रेनियम को कंपेयर कर रहे हैं प्राइमेट से, तो ये गलत है. सेकंड देखते हैं. अ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज, ये तो अ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज, दिस इज अ न्यूबॉर्न एंड दिस इज प्लूरल. यहाँ पे आपने अ यूज करा है और यहाँ पे आपने प्लूरल यूज करा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. अ ह्यूमन बेबीज क्रेनियम, अगेन दिस इज कंपेयरिंग cranium to the primate. This is incorrect. Fully formed craniums, a human baby, a human is born with a cranium that. Okay, okay, all right. Unlike other primates which are born with fully formed craniums, a human is born with a cranium that consists of 8 brains. A human is born, all right. Okay, let's look at the fifth one. A fully formed cranium, the cranium of a newborn human baby. Again, this is comparing the cranium, right? Unlike other primates which are born with fully formed craniums, the cranium of a newborn baby. यहाँ भी आप cranium compare कर रहे हो शिवराज. You are not supposed to compare the cranium with a primate. You're only supposed to compare human with a primate. ठीक है? Unlike other primates which are born with a fully formed cranium या which are born with fully formed craniums, because we are talking about primates and we are talking about plural. We are talking about different kinds of primates. Therefore, we need plural here. A fully formed cranium, ये वैसी सिंगुलर आ गया. और दूसरी बात, आप इधर क्रेनियम को कंपेयर कर रहे हो प्राइमेट से. ठीक है, देयरफॉर हमारा आंसर आएगा अ ह्यूमन इज born, unlike other primates which are born with fully formed craniums, a human is born with a cranium that consists of 8 bones that take years to fuse together. ठीक है, that here is also referring to a cranium, so that is again a validation for this to be the right answer. Fifth is incorrect, Shivraj, because of the reasons I already mentioned. All right, let's move on to the next question now. Okay, Anushka says the fourth option. Let's look at whether Anushka is correct or incorrect. Because women buy approximately 80% of ties sold in India, they're often displayed near perfume or women's clothing departments. ठीक है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. Because women buy approximately 80% of ties sold in India, they're often displayed near perfume or women's clothing department. What is this they referring to? Is they referring to ties, or is they referring to, sorry, or is they referring to women? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू फिगर आउट कि ये दे किसको रेफर कर रहा है. और हमारे
जो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रोनाउन को एम्बिगुअस दिया होता है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे प्रोनाउन है ही नहीं, आप उन ऑप्शंस को सबसे पहले कंसिडर करो, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में भी जिन ऑप्शंस में प्रोनाउन होगा ना, वो आपका सोल्यूशन शायद करेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज दोज प्रोनाउंस विल ऑल्सो मेक द सेंटेंस एम्बिगुअस. ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस that are not using a pronoun. We only have option 4 and we have option 2. Let's look at option 2. Because women buy approximately 80% of ties sold in India, ties are often being displayed near perfume or women's clothing departments. ठीक है. But this is are often being displayed. ठीक है. Let's look at this. Ties are often displayed. This seems to be a more apt construction. जहाँ भी being आता है और जहाँ being नहीं आता, जिसमें being नहीं आता आप उस ऑप्शन को ज़्यादा कंसिडर करो हमेशा, क्योंकि being वाले ऑप्शन आपके ऑप्शन को ज़्यादा वर्डी कर रहे हैं. दिस इज एन ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन. आप बाकी ऑप्शंस देखोगे तो आपके सारे बाकी ऑप्शंस में the displaying of ties is often. This is also not using a pronoun, but the displaying of ties is often is again a very awkward construction. यहाँ पे दे है, यहाँ पे दे है. These pronouns, Anushka, I hope you understand, these pronouns are not a solution for us because they are ambiguous. दे किसको रेफर कर रहा है, टाइज को रेफर कर रहा है या विमेन को रेफर कर रहा है. प्रोनाउन जब आपका एम्बिगुअस होता है आप वो ऑप्शन चूज करते हो जहां पे प्रोनाउन नहीं होता. देयरफॉर वील गो विद द फोर्थ ऑप्शन. प्रोनाउन वालों को सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे और ये दोनों कंस्ट्रक्शंस भी हमारी ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शंस हैं. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is again testing you on pronouns along with other things, but here also pronouns is a big thing. Okay, Anushka says the second option. Alright, let's look at the question. Thieves steal Hondas and Toyotas from the 1990s more than other models because they can chop them up and sell them for parts that are worth more than the car. Now, we are comparing two things. We are comparing what do thieves prefer to steal more than what they prefer to steal, right? So they prefer to steal X more than Y या more than steal Y. Your question is saying steal X more than Y. I am saying it should be steal X more than steal Y because you are comparing कि मैं आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो और उन दोनों चीज़ों को आपको स्टील करना है. तो आप एक चीज़ को स्टील करके दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं करोगे, आप एक चीज़ को स्टील करोगे और दूसरी चीज़ को स्टील करोगे.
तो आप उन दो स्टीलिंग को कंपेयर कर रहे हो, आप थेफ्ट को कंपेयर कर रहे हो. यू आर नॉट कंपेयरिंग द कार्स, यू आर कंपेयरिंग द थेफ्ट ऑफ द कार्स. ऑल राइट, देयरफॉर वी ऑलरेडी एलिमिनेट ऑप्शन वन, क्योंकि मोर देन अदर मॉडल्स है. ऑप्शन टू क्या है, मोर देन दे स्टील अदर मॉडल्स. और ऑप्शन थ्री क्या है, मोर देन दे डू अदर मॉडल्स. दिस डू अदर मॉडल्स इज ऑल्सो कंपेरेबल. ठीक है, तो अभी हमारे ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं. ऑप्शन वन हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज ऑफ अ कंपैरिजन एरर. नाउ लुक एट द अदर थिंग्स in your options. More than they steal other models because they can chop them up and sell them. What is them? What is them? What is them? Right? This is again an ambiguous pronoun because there are so many things in your sentence. This them can refer to anything, but ये ambiguous है. तो ये pronouns भी ambiguous हैं इस ऑप्शन में. Therefore अनुष्का विल गो विद ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे ही इन्होंने थेफ्ट वाली चीज को कंपेयर करा है. और इन्होंने क्या बताया, दे कैन डिसमेंटल द कार्स एंड सेल द पार्ट्स दैट आर वर्थ मोर देन द कार. सो दिस इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन एप्ट वर्ड्स. श्योर यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, यहाँ पे चॉप यूज हुआ है, यहाँ पे डिसमेंटल यूज हुआ है. बट डिसमेंटल इज, in my in my opinion, dismantle is a better word, but this is not mentioned in the sentence, so I get why you'd be confused about it. But an error of the pronouns is more important, and the third option is solving the error of the pronouns. All right, therefore we'll go with option C. सबसे पहले हमने कंपैरिजन एरर हटाया, फिर हमने प्रोनाउंस की एम्बिग्विटी हटाई. ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगेन दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. ठीक है, आपको देख के लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज हुए हैं, बट अगर आप इस क्वेश्चन के रूल को क्रैक कर लोगे, दिस इज परहैप्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस यू हैव. I'll give you a hint. This is a clear case of parallelism. Anushka says the third one. All right, let's look at whether she's gotten this one correct. Unlike ancient Greek art, which saw the veneration of the animal form and the development of equivalent skills to show musculature, poise, beauty, and anatomically correct proportions, ancient Roman art depicted gods as idealized humans shown with characteristic distinguishing features. What are we comparing? We are comparing ancient Greek art with ancient Roman art. ठीक है, आप एंशियंट रोमन आर्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो. एंशियंट रोमन आर्ट डिपिक्टेड गॉड्स एज XYZ. Ancient Greek art, which saw the veneration of the animal form and the development of equivalent skills.
ठीक है, तो आपके पास क्या चीजें हैं? वेनरेशन है और डेवलपमेंट है, ठीक है. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? दिस इज अ वर्ब. वेनरेशन एंड डेवलपमेंट आर नॉट बीइंग यूज्ड एज वर्ब्स राइट नाउ. हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले वेनरेशन और डेवलपमेंट दोनों पैरेलल हो, और वो इससे भी पैरेलल हो, ठीक है. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. दिस, these are not verbs. We need them to be verbs. We need them to be verbs, right? While ancient Greek art saw the veneration of the animal form and developed. एक चीज सॉल्व हो गई है, ये वर्ब बन गया है, बट ये अभी भी वर्ब नहीं बना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. While ancient Greek art venerated, this is a verb, and developed, this is a verb. These are parallel, so this looks to be the correct option. Let's look at the fourth one. Unlike ancient Greek art which venerated, okay, this is a verb, and development. तो ये वहां पे फिर से गड़बड़ हो गई, because development is not parallel with venerated. Therefore fourth is incorrect. Anushka, you got it right. All you had to do in this question was आपको veneration और development को parallel करना था और इन दोनों को verb बनाना था, ताकि ये आगे वाले sentence के साथ parallel हो जाए. क्योंकि यहाँ पे depicted है, यहाँ पे भी आर्ट का डिपिक्शन हो सकता था. had they used depiction, then then veneration and development would have been correct, but they've used depicted, they've used a verb. That is why we need veneration and development to be in their verb forms. Right now they're not in their verb forms. All right, let's look at another question now. This question is testing two three things. One thing that it is testing is noun verb agreement, and the other thing it is testing is pronouns. Are your pronouns ambiguous, or are they referring to the correct targets? दो चीजें क्लियरली टेस्ट हो रही हैं इसमें. आई हैव गिवन यू अ हिंट, ट्राई टू गिव मी द आंसर क्विकली. Okay. Anushka says C. All right, let's look at the solution now. Let's look at every option one by one. Climate experts, after reviewing this year's recordings of the atmosphere, is not surprised. ये are होना चाहिए, because who are not surprised? अगर आप verb को question पूछोगे, आपका verb है is, आप question पूछोगे who are not surprised, या who is not surprised? Climate experts, this is plural, this is singular. Noun and the verb are not in agreement. Option A is incorrect. After reviewing this year's atmospheric recordings, climate experts are not surprised by how warm it has been. What has been warm? Atmosphere has been warm. It किसको रेफर करना चाहिए? एटमोस्फियर को. और आपके सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? एटमोस्फेरिक रिकॉर्डिंग्स. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि
वार्म क्या हुआ है? वार्म एटमॉस्फेयर हुआ है, वार्म एटमॉस्फेयर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ठीक है? Therefore, this was a clear case of a pronoun error. Let's look at C. Climate experts are not surprised by how warm it has been after reviewing this year's recordings of the atmosphere. It is clearly referring to the atmosphere in this case. There is no ambiguity as to what it is referring to. So, this seems to be the correct option. Let's look at D and E. After reviewing this year's atmospheric recordings, climate experts are not surprised by how warm they have been. Who have been warm? Climate experts have been warm क्या? या atmospheric recordings have been warm? ना recording warm हो सकती है, ना आपके climate expert warm हो सकते हैं. So again, this is a clear case of a pronoun error. Let's look at E. Climate experts, after reviewing this year's atmospheric recordings, are not surprised by how warm this has been. This is again wrong. This should be referring to atmosphere, but it is atmospheric recordings that the sentence is using. Therefore, this is again a case of an error. C is the correct option. Good job, Anushka. Let's move on to the next question now. Come on, guys, rack your brains, give me the answer. Follow the process of elimination like we did in the previous question. आपको सारे सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करने से इजी हो जाता है. Okay, let's look at the solution to this question now. A sad truth about the human race is that most people lie to both strangers and loved ones on a daily basis, even though they believe it is wrong. Okay, ऑल राइट. सबसे पहले तो आपके ऑप्शन डी और ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गए. क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि यहाँ पे लाइज यूज हुआ है. Right, both of them are using lies is singular form of the verb, and we are talking about people is plural. So we already eliminate option D and option E. Shivraj says option C. Alright, Shivraj, let's see whether you correct. Lie to both strangers and loved ones on a daily basis, even though they believe it is wrong. What is wrong? What is wrong? Lying is wrong, yes, but are we talking about lying here? Is it uh, referring to a target? Is it referring to a target? यहाँ पे प्रोनाउन की एम्बिग्विटी है. Clear. Lie to both strangers and loved ones on a daily basis, although they believe it is wrong. एक और चीज है, अगर आप देखोगे, when we are talking about they, is they referring to people? Is they referring to strangers? Is they referring to loved ones? ठीक है.
हम सी देखते हैं, lie to both strangers and loved ones on a daily basis even though they believe it is wrong to do so. Now it is clearly referring to lying. इट इज क्लियरली रेफरिंग टू लाइंग. ठीक है, आप दे को जस्टिफाई भी कर सकते हो ये बोल के कि मोस्ट पीपल, वी स्टार्टेड द सेंटेंस बाय टॉकिंग अबाउट मोस्ट पीपल, सो दे is referring to most people. This can be justified. But what about it? It has to refer to lying. It has to have that action. और जो हमारा C part है, which Shivraj also says is the correct option, is fulfilling that part by inserting although it is wrong to do so, although it is wrong to lie. So it clearly has a target now, and therefore C is the correct option. Good job, Shivraj. Let's move on to the next one. Remember the rule of each, every. इनके रूल याद है आपको जो हमने डिस्कस करे थे लास्ट वीक? Yes, try to recall those rules and try to answer this question. Shivraj says the second one. All right, all right. Let's look at the question now. India, like Italy and China, has no single dominant cuisine. Indian food comprises many different styles of cooking, with each a product of their regional influences, from the fiery vegetarian dishes of the south to the Portuguese influenced Goan cooking of the west to the more familiar Mughal food of the north. So, ये जो है आपका पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मॉडिफायर है. ठीक है, अब हमको मॉडिफायर में क्या चेक करना है? ये जो है देयर, या ये जो है इट्स, व्हाट इज दिस रेफरिंग टू? इज दिस रेफरिंग टू इंडियन फूड और इज दिस रेफरिंग टू स्टाइल्स ऑफ कुकिंग? इज दिस रेफरिंग टू स्टाइल्स और इज दिस रेफरिंग टू इंडियन फूड? Right, so this is an ambiguity, and that is why we'll do away with these two options, because they are incorrectly modifying Indian food. Right, this modifier, the entire modifier with each a product of their, या with each as a product of its, या आपके बाकी के तीन option, they should be modifying Indian food. All right, but the first two are creating confusion by having a different target of different styles. इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे शिवराज. लेट्स लुक एट the other options. Each products of their, each can never be products because each refers to singular. If you remember the rule, each और every हमेशा singular को रेफर करता है. तो each products भी गलत है, each products of भी गलत है, each a product of बिल्कुल सही है. Our modifier we have to make sure has a direct target. जब हम ऐसे प्रोनाउन इंसर्ट कर देते हैं और जब हमने विद इंसर्ट कर दिया तो वो इनकरेक्टली स्टाइल्स को रेफर करना शुरू कर देता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन.
This is perhaps the toughest question of the day. At least according to me, it is the toughest question that I put in. अगर आप लोगों को सच्ची में आसानी से आ जाता है, then that is like a brilliant thing. Okay, Anushka says the first one. All right, let's look at the explanation now. The football team, tired after 4 hours of practice and wanted to reach home quickly, took a shortcut. All right, the football team, tired after 4 hours of practice and wanted to reach home quickly, took a shortcut. Now, clearly, this is a modifier. Okay, football team took a shortcut is your base sentence. Tired after 4 hours of practice and wanted to reach home quickly is your modifier. सबसे पहले तो हम अगर ऑप्शंस को देखेंगे हम क्लियरली वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी बिकॉज इट सेज विल टेक अ शॉर्टकट. ठीक है, वो तो आपका टेंस ही बदल रहा है, तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी. नाउ टायर्ड आफ्टर 4 hours ऑफ प्रैक्टिस एंड वांटेड टू रीच होम क्विकली. जब आपके मॉडिफायर में ऐसी दो चीजें होती है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट द मीनिंग ऑफ द टू थिंग्स इज सिमिलर. अब इसमें क्या हो रहा है, इवन दो आपको फेस वैल्यू पे लगेगा कि टायर्ड और वांटेड ये दोनों चीजें पैरेलल है, ठीक है, ये आपको फेस वैल्यू पे लगेगा. बट व्हाट इज हैपनिंग इज टायर्ड आफ्टर 4 hours ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि फुटबॉल टीम 4 घंटे प्रैक्टिस करके थक गई एंड वांटेड टू रीच होम क्विकली. एंड वांटेड टू रीच होम क्विकली इज टॉकिंग अबाउट अनदर इवेंट. ठीक है, these two are not separate events, these two are separate, these two are different feelings. these this is कि थक गए हैं, और दूसरा क्या है कि थक गए हैं और इसलिए उन्हें जल्दी भी पहुंचना था. बट दे आर नॉट सेपरेट इवेंट्स, देर इज ओनली वन इवेंट. द वन इवेंट इज 4 hours of practice which made them tired and which made them want to reach home quickly. But if you say tired after 4 hours of practice and wanted to reach home quickly, it turns it into two separate events. But these things happened simultaneously and there was only one event. इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. ठीक है, tired after 4 hours of practice and wanting to reach home quickly and wanting to reach home. अब इसका और इसका मतलब आपका सेम निकल के आ रहा है. ठीक है, इसका और इसका मतलब आपका सेम निकल के आ रहा है. क्यों सेम निकल के आ रहा है? टायर्ड आफ्टर 4 hours ऑफ प्रैक्टिस, थक गए 4 घंटे की प्रैक्टिस के बाद, और प्रैक्टिस की वजह से दे वांटेड टू रीच होम क्विकली ऑल्सो. तो इनका मीनिंग पैरेलल हो रहा है इवन दो आपको फॉर्म सेपरेट लगेगा, बट मीनिंग इज नाउ पैरेलल. इसमें आपको फॉर्म सेम लग रहा है बट मीनिंग इज डिफरेंट. Therefore, this seems to be the correct option. Let's look at C. Tired after 4 hours of practice and because they wanted to reach home quickly. Again, it is turning it into two separate events and it is giving you another construction of because, which is again awkward and the meaning is being changed. The meaning is being turned into something else. Let's look at option E. Tiring after 4 hours of practice and wanting to reach home quickly. Tiring after 4 hours of practice is again a different meaning. इधर भी आपको फॉर्म सेम लगेगा, वांटिंग और टायरिंग फॉर्म सेम लग रहा है,
but tiring after 4 hours of practice is a different meaning altogether. इसमें meaning is parallel, even though you might say on the face value form is different, but the way the sentence is constructed, the structure of the participle is the same, because the meaning is the same. There is only one event, 4 hours of practice, जिससे थकान हुई, जिससे घर जाने का मन करा. Tiring after 4 hours of practice is a different meaning. Alright, therefore we eliminate option E and we go with option B. This was perhaps the toughest question I had inserted in today's class. Uh, now, guys, we are done with today's practice of sentence correction, though I have two important things that I want to discuss with you. One is that we'll do the same practice tomorrow, where I'll gather a bunch of questions. We'll begin at the same time. We'll begin at 4 p.m. Number one, if there are other portions of sentence correction that you want me to cover or that you have doubts on, comment on the chat tomorrow. Number two, my plan is I'll begin with another topic after ending sentence correction tomorrow. ठीक है, मैं कल सेंटेंस करेक्शन खत्म कर दूंगा. उसके बाद माई प्लान इज टू बिगिन विद अनदर टॉपिक. इफ यू हैव recommendations about the topics that you want to study, again put them in the chat tomorrow. चैट की शुरुआत में हम ये चीज डिस्कस करेंगे. इधर you give me some doubts that you have with sentence correction or topics that you want me to clear out, or you tell me what you want me to begin with. All right, otherwise in any case I'll let you know my plan tomorrow. See you tomorrow. This is it for today. Till then, stay strong, stay mellow.